When you turn 18, you begin to learn the basics of being a young adult. Opening a bank account, renting a house, going grocery shopping, driving a car, writing a check, and so on. But as we learned in the last episode, when an 18-year-old leaves a childcare institution, it's these basic, independent living skills that can make their exit daunting and chaotic. This neglected transition out of care and into adulthood leads to re-traumatization of these young people who have already been through irreparable damage in their childhood. Welcome to Care of the State, a podcast by Catalyst for Social Action that sheds light on what happens to orphaned and vulnerable children in India. The show helps you understand the system of institutional care, fostering, adoption, aftercare, and how organizations and government institutions work to care and protect these children. Experts from Catalyst for Social Action, or CSA, will be talking to lawyers, researchers, NGOs, and other experts from the space who will help us understand what's happening, what are the struggles, and what can be done to provide a safe environment for these children to grow and reintegrate into society. Geeta Gopal, founder of A Future for Every Child, along with Catalyst for Social Action, co-authored a white paper called Empowering Youth Leaving Care at 18. It stated that 50,000 young people exit institutional care every year. But what happens to these care leavers? To understand the ground reality, we have 20-year-old Vaishali, a care leaver from Pandita Ramabai Mukti Mission, a childcare institution in Kedgaon, Ahmednagar. She recalls her time in a childcare institution. 2012 में मेरे पापा का ब्रोन मैरो फेल हुआ। उसके बाद 2 ईयर ट्रीटमेंट चल रही थी उनके ऊपर। जो हमारे पास था ना वो सब हमने खो दिया। उसके बाद 2014 में मैं सीसीआई में चली गई और फिर सीसीआई में जाने के बाद वो सब मेरे लिए बहुत नया था और माँ बाप से बिछड़ के रहना ये सब मेरे लिए बहुत हार्ड था वो, क्योंकि मैं कभी मेरे माँ बाप को छोड़ के कहाँ भी रह नहीं पाती थी। और जब मैं सीसीआई में रहने के लिए गई तो 5 मंथ में बहुत रोई थी और मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर भी थी, एक एल्डर सिस्टर थी और एक मेरे से छोटी थी। तो फिर वहाँ जाने के बाद कुछ नया था और माँ बाप से भी अलग होके आई थी, तो अब आगे क्या करने का। और तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरा 8th स्टैंडर्ड आधा ही घर पे हुआ था और आधा मैं सीसीआई से करने वाली थी। फिर मैं सीसीआई में जाने के बाद फिर हाफ 8th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ पे कंप्लीट की। फिर मैं वहाँ पे अच्छे से रहने लगे। फिर अमेरिका से आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो आते थे, तो वहाँ पे सब अच्छा लगता था। और फिर मेरे जो बहन थी वो भी वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े और मैं भी वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी। फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में वहाँ पे थी, जो कनाडा के जो लोग थे उन्होंने मुझे गिटार प्ले करना सिखाया था। फिर मैं गिटार प्ले करने के साथ साथ मैं वहाँ पे सॉन्ग्स गाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर 12th स्टैंडर्ड होने के बाद मुझे घर पे आना था। जो मैंने अनुभव ले जो मैंने वो सब मेरे लिए बहुत ही अहमियत के थे, क्योंकि उनमें बहुत कुछ सीख गई। मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता था, मैं वहाँ पे गिटार सीखी। एक बच्चा जब माँ बाप से दूर जाता है तो वो उससे कैसा रहना चाहिए वो मैं सब सीख गई। और फिर जो हमारे गार्डियंस थे, मेट्रन्स थे, वो भी हमें बहुत सारे गाइडेंस देते थे वहाँ पे, पढ़ाई के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में, सभी अलग अलग तरह के हमको गाइडेंस देते थे। इसलिए मुझे सीसीआई में बहुत अच्छा लगता था। Children in childcare institutions come from diverse backgrounds who've suffered different levels of trauma and have varying kinds of vulnerabilities. 25-year-old Suraj, a care leaver who was admitted as an orphan into an observation home, narrates his experiences of sharing space with more than 300 children who resided in a CCI along with him. Actually, मैंने 7 to 8 साल इंस्टीट्यूशन में लगाए। मेरा एडमिशन 12 साल में हुआ था, 12 ईयर में पुणे बॉयज़ ऑब्जर्वेशन होम में हुआ था। और वो सीसीआई की जो बिल्डिंग है वो बहुत ब्रिटिश कालीन है, तो उससे वो ज़रा ऐसा लगा था कि जेल में किधर डाला है क्या हमें। पर उधर एक्चुअली लाइफ बहुत अच्छी थी। बच्चों को जो सिखाते वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, उधर स्कूल था हमारे लिए 7th स्टैंडर्ड तक।
After that 8 to 9 standard we are going to government school, and then we get admission also in diploma by the CCI. हमको CSA से क्लासेस वगैरह थे, डोनर्स आते आने के मिलने के लिए, तो CCI की लाइफ बहुत अच्छी से जा रही थी. मेरा उधर इंस्टीट्यूशन ने मेरा डिप्लोमा का भी एजुकेशन कंप्लीट करवा दिया, और हमको ट्रिप पे वगैरह मूवीज़ देखने के लिए भी लेके जाते थे. तो उधर की लाइफ अच्छी थी. अभी CCI बोले तो मेरे लिए पहला घर वही है. Anyone who leaves their home for the first time, be it a teenager or an adult, experiences uncertainty, homesickness, fear, anxiety, and a whole host of overwhelming emotions. One can only imagine the plight of a vulnerable young person who, when they turn 18, is ordered by law to leave what they consider their home. Our host, Satyajeet Mazumdar, head of advocacy at CSA, asks care leavers Vaishali and Suraj to explain what went through their minds when they were first informed that they had to exit the institution as soon as they turned 18. वैशाली, तो आप थोड़ा मुझे बताइए कि आपको जब पता चला कि आपको इंस्टीट्यूशन से बाहर जाना होगा, जब आप 18 साल के हो जाए तब आपको इंस्टीट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगा? तो आपका क्या रिएक्शन था? जब मुझे पता चला कि मुझे CCI छोड़ के जो मेरा घर है वहाँ पे जाना है, मतलब अगले एजुकेशन के लिए, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे CCI से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि CCI में हमारा डेली रूटीन चलता था. सुबह हम मॉर्निंग में 5 o'clock उठते थे, फिर 5:30 से लेके हमारी प्रेयर होती थी, और फिर जो हमारा काम है वो हम करते थे. फिर 9 o'clock हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, थोड़ा सा खेलते थे, और फिर वापस खाना खाने के बाद हम स्टडी पे बैठ जाते, और फिर 10 o'clock हम सो जाते थे. ऐसा हमारा सब रूटीन चलता था. तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी. अभी मेरा 18 कंप्लीट है, तो मैं बाहर जाऊंगी तो मतलब ने कैसे हैंडल कर पाऊंगी. अभी जॉब तो करना है, और हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करके आगे बढ़ सकूं. और मैं बहुत डर गई थी बाहर आने के बाद. जो हमारे HR वगैरह थे, मतलब मिशन डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की थी कि नहीं क्या, CWC मतलब जो बाल कल्याण समिति है, उन्होंने बोला है कि अभी तेरा 18 एज कंप्लीट है तो तेरे घर पे जाना पड़ेगा, और अभी तुझे वहाँ से एजुकेशन करना पड़ेगा. तो फिर मैं डायरेक्टर जो हमारे थे, तो मैं उनसे बात की मैंने कि मुझसे ये सब नहीं होगा. मेरा एज 18 है, ये मुझे पता है, लेकिन बाहर जाके मैं सब वो कैसा हैंडल कर पाऊंगी, मतलब मैं मेरा एजुकेशन कैसा करूँगी. और मुझे जॉब भी करना था, तो मैं जॉब भी मतलब ने क्या, अभी जॉब तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसा जॉब चाहिए वैसा मतलब मिल पाएगा ये या नहीं, ये सब मुझे बहुत टेंशन था. इसलिए मतलब जब मैंने मिशन डायरेक्टर से बात की, मेरे मेट्रन थे जो गार्डियन थे, उनसे बात की, उन्होंने मुझे समझाया, और फिर मैं 18 साल होने के बाद फिर मैं CWC मतलब बाल कल्याण समिति के थ्रू मैं वहाँ से बाहर आई मेरे घर पे. फिर मैं मेरे फैमिली के साथ ही रहती थी. हमारे जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे जब बताया था मुझे ये हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तो पहले उधर से भाग के हमारे रूम में गया था. बहुत रोने के बाद उन्होंने समझाया 18 साल का ये एज रहता है तो हमें आपको बाहर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है. जब 18 में होता तो मेरा डिप्लोमा का लास्ट ईयर पेंडिंग था, तो मुझे उसका भी ये टेंशन आया था कि मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होगा या नहीं, मैं बाहर जाके क्या करूँगा, जॉब ढूंढूंगा या एक एजुकेशन कंप्लीट करूँगा. पर तभी मेरे वो इंस्टीट्यूशन ने मेरी मदद की. उन्होंने मेरा डिप्लोमा का कॉलेज फी पे की, और मुझे 10 स्टैंडर्ड को कुछ स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट से. तो मैंने वो विद्यार्थी सहायक समिति पुणे, उधर मेरा 1 साल के लिए हॉस्टल है, तो उधर एडमिशन लिया था. तो डिप्लोमा मेरा उधर ही कंप्लीट हुआ. पर मेरे जो सर एक्चुअली हमको जब बताया था 18 साल को छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले मेरे कोई बहुत जन दोस्त भी 18 साल होने के लिए वो बाहर भी भेजे थे उनको. कुछ जनों के पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उनको दूसरे CCI में भेजना पड़ा उन्हें, आफ्टर केयर. वो मेरे जो फ्रेंड है, वो बहुत जन भाग के गए, और उन्होंने फिर ये CCI में आने की रिक्वेस्ट की, पर वो नहीं हो सका, तो उनको जॉब वगैरह ढूंढ के वो करना पड़ा था.
एक जो दोस्त था उसने प्रिंटिंग का थोड़ा सीख लिया था, तो हमारे टीचर के रेफरेंस से उसे जॉब मिला स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, तो उधर जॉब कर रहा है। कोई जन मार्केट में जॉब कर रहे, और कुछ जनों ने सर जॉब छोड़ के तो गलत धंधे में गए, क्योंकि अभी 18 साल के आप बाहर पढ़ोगे, 18 साल में हमें सब मिलता था अंदर, पर बाहर जब गए तो कुछ नहीं, सोर्स ही नहीं है कि किधर जाए और क्या करे। तो कोई जो बताएगा आगे हमें मिलेगा मेंटर वगैरह, तो उस गाइड थ्रू वो बच्चे जाते हैं। Aftercare facilities are what help rehabilitate and reintegrate a young adult comfortably into mainstream society after they age out from an institution. However, aftercare services are grossly inadequate, and when measured against the number of children in institutional care in India and how long CCIs have been around, this shouldn't be the case. Currently, there are only a few institutions and organizations providing these services in the country. Satyajeet asks Bharathy Tahiliani, founder of Kshamata Skills Development Center for Young Women, the reason behind the presence of very few aftercare homes in the country. The ratio between the childcare institutions and aftercare homes, which cater to the needs of young boys and girls who leave childcare institutions, is very few. What is the reason that the ratio is so low? There are very few centers like us as compared to the childcare institutions which are there developed by the government and non-government agencies. So there are more childcare institutions or childcare homes, shelters, as compared to the adult major women centers. So when we talk about centers which are aftercare or after institutional care, we want to deinstitutionalize the process and facilitate the transition into society. Very complex process, very resource intensive process. It requires the participation of multiple stakeholders. It requires a progressive mindset and a sensitized way of functioning. It also requires a lot of sharing of information, because when we work with the participation of multiple stakeholders, you need to share a lot more information so that you are as effective as your stakeholder. These are the challenges that we are riddled with where it comes to adult women care and support, because there is less information, there is less resources, there is discombobulation of information sharing or referrals. Some organizations are favored, some are not. The entire mechanism of this work requires a lot more thinking, a lot more resource building, and a lot of sensitization of donors as well. It requires your ecosystem to work as well. It requires your referrals, because if I can't give a training to my girl or a woman, I need to collaborate. I have no choice, and we should not have a choice. We must collaborate. The IT world itself is collaborating and outsourcing and looking at how to work in a multidisciplinary way. I think it's the same thing for the NGO world or the development sector. We have to outsource and we have to collaborate. I think this is what has been the message during COVID times. The number of collaborations also that have gone up is humongous. We had to collaborate and do it with other people. So I think that's the way to go. What does reintegration or rehabilitation look like for them? I think reintegration and rehabilitation is by far one of the most complex processes that we have come across in social development sector. It is not just about education, it is about confidence, it is called self-efficacy. Any girl or a woman whom we think is successfully reintegrated or rehabilitated is one who is able to have a sustainable job. She has the skills to have a job, is able to make financial independence a reality, is able to make decisions, and decision making a very key critical aspect of feeling empowered. So I can make my decisions. I understand the consequences of my decisions. I'm able to have a support system, not just the support system of the NGO. The NGO has to have a very limited role after some time. So if I'm a girl or a woman, I am able to create that support systems of friends, because many times they have dysfunctional relationships at home. So maybe I can't go back to my family, but I'm able to create those support systems or within the community now where I'm staying. Ability to not be fatalistic. You know, many of the women we have come across, they're very fatalistic. They are aspirational, but at the same time, fatalistic. It's a paradox that we see many times. Right. But they are able to aspire for more, and they are able to dream.
And they're able to say, okay, I can do this much, but tomorrow I will be able to do more. So I think that is the mental shift that we think is very important when we talk successful rehabilitation and reintegration, and better coping mechanisms. So many of the women that we work with, we have seen that they have developed those coping mechanisms that help them to cope with negative circumstances around them. The process of unlearning and relearning, developing positive, healthy coping mechanisms. I think that these are very important indicators, as if you use a technical word. I'm able to call my relatives home. This could be another indicator where, oh, now I'm part of society. There's a normalization to my life. And this could be my indicator of successful reintegration. So it could be a little different for each person, because this is also a person-centric approach. I'm able to sustain a job and relate to my co-workers and my boss at work. So healthy interpersonal relationship is another very strong indicator of rehabilitation, reintegration. And the last thing, I think, I'm able to live a life of dignity. I'm not ashamed of my existence. And I'm able to be confident of me as a person. And what we have seen also among our women is I'm able to reach out to somebody as well today. So this is another evolved way of reintegration or rehabilitation. It's not with everybody, but we have seen it with a few women who show leadership qualities. Kshamata also facilitates the transition of vulnerable women from shelter homes to gain greater personal autonomy. They identify and reconcile gaps and strengthen the services that facilitate the reintegration of vulnerable women and girls when they have to go back to a life outside these homes. Bharathy explains the process of de-institutionalizing women and making them what Kshamata likes to call saksham, which means skilled. So what the skill center does is deinstitutionalize the process. Now, this is very challenging because you have lived as an institutionalized person for a very long time. So you're dependent on other people making your decisions or taking care of you and doing everything for you. That shift is a major, major shift that happens. It creates a lot of chaos, but in that mess, we change lives. So what does a center do for such women is create that safe space, a space to be themselves. So many times we have seen that women who come, they take time to adapt to a more freer situation where you are expected to maybe decide on what you want to do and voice your opinion. They're not used to that. So it takes a bit of time for them. Sometimes their personalities are so subdued, we really don't know which personality is whom. So they discover their personalities. And because they are coming from institutional care, they keep looking towards you to make decisions. Decision making then becomes personal. They decide what food they want to eat for the whole week. So this is decided by them, not by the social workers at the center. So life skills become an integral part of the work because it's easier to teach hard skills, but it is very, very tough to integrate soft skills in our lives, because that means that I need to be responsible for my own life. And this is where our major focus of the transformation is, to focus on soft skills and life skills. It's easier to measure hard skills. Oh, I have learned this and I'm going to have my job in this area. But measuring life skills and soft skills is hard, but it is as important as a hard skill. Our focus also is in participation, because we do a lot of person-centric care and planning for every woman. Participation of the women is very important again. They are choosing their careers or what they want to learn. Creating options and facilitating options is the best way to go, because that will put the ownership on the woman herself. So I think learning about ownership and responsibility is what is done at the Transformation Center. And then rest of the other things like training, safety, hygiene, sanitation, financial literacy, recreation, and the most important, mental health care, which is been the greatest challenges in programs like these. Because many times what happens, we may not know the whole history and the paperwork of the woman who comes to us by whatever reason. So there are many times we have come to know that the woman is actually suffering from a certain depression or a mental health issue which needs to be addressed, because if that's not addressed, your whole life skills, vocation, job placement is going to go for a toss.
So I think mental health care becomes a very, very important part of the transformation center as well. A report by Udyan Care, Beyond 18, a study on aftercare practices, says that transitioning out of institutional care tends to have a negative effect on the emotional well-being of care leavers, and the impact is greater on young women compared to young men. They not only need help finding accommodation, but also finding a job and securing their finances. After completing a course in financial accounting, Vaishali worked with an insurance company. But did she receive help from anyone within the system? She tells Satyajeet how she completed her education and managed her household expenses with an ill mother and 2 siblings to look after. जब मैं घर पे आई ना तब मम्मी काम को जाती थी। एक आंटी थी, उसकी केयर टेकर थी, तो वो वहाँ पे उसको मतलब सैलरी अच्छी मिलती थी। मैं और मेरी एल्डर सिस्टर है, हम दोनों आए थे, और जो स्मॉल सिस्टर है उसको अभी 1 ईयर बाकी था, इसलिए वो सीसीआई में ही थी। फिर हम बाहर आने के बाद घर पे आए तो मम्मी का जो शेड्यूल था, मतलब जो घर का शेड्यूल था, वो पूरा बिगड़ गया था, क्योंकि हम भी आए थे, हमारा भी खर्चा था, और मम्मी जो मैनेज करती थी, बैंक में जो पैसे इन्वेस्ट करती थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा था। उसके बाद जब मैं CWC मतलब बाल कल्याण समिति में डिपार्चर करने के लिए गई थी ना, तब मुझे जो सर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे लूसी मैम का नंबर प्रोवाइड किया था। फिर मैंने उनसे बात की थी, उनको मैंने सब बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं हॉस्टल से तो घर जा रही हूँ, लेकिन एजुकेशन करने के लिए भी उतने मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मम्मी का भी कभी कभी BP लो हो जाता था, तो उसको ने क्या बार बार एडमिट करना पड़ता था हॉस्पिटल में, तो कभी कभी जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो उनमें ही जाते थे। तो फिर मैंने लूसी मैम से बात की, फिर उन्होंने मुझे हेल्प की आगे के एजुकेशन के लिए। Given the handful of organizations working in aftercare and the next to nil support from the government, many care leavers get left out. So, what usually happens to young women who get deinstitutionalized? Vaishali tells us more. जो भी देखे ना, 18 के साल बाहर आने के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की तो शादी हो चुकी है। ऐसे भी बहुत लड़कियां हैं जो 3rd ईयर के बाद मतलब सिर्फ उन्होंने कॉलेज किया, एक्स्ट्रा कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉलेज किया और वर्क करते, लेकिन उनको अच्छी सी पोस्ट नहीं मिलती वहाँ पे। A December 2018 research report titled Situation of Aftercare Youth in Delhi revealed that most care leavers are unable to access adequate housing, health services, skills, employment benefits, and social security. Satyajeet asks Suraj to explain how he prepared to face the big bad world after exiting a protected and secure institution. तो सूरज, आपने अपने आप को तैयार कैसे किया CCI के बाहर जाके एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए? आपने क्या किया जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर कर पाए? एक्चुअली सर, मेरे जो इंस्टीट्यूशन के टीचर्स थे, केयर टेकर्स, जो ऑफिस स्टाफ था, सब मुझे गाइड कर रहा था। तो उससे मोटिवेट करके हमको जो मिलने डोनर्स आते थे, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स, उनसे भी ऐसा रिलेशन हुआ कि ये फैमिली है, तो वो गाइड करते गए मुझे। मेरा डिप्लोमा का एडमिशन मेरे जो स्कूल के टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल, तो उन्होंने उधर लेके दिया था विद्यार्थी सहायता समिति में। तो उधर भी अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छा स्टाफ था, सब गाइड करते हुए मेरा जो डिग्री करना था, तो मेरा पहला ये था ड्रीम कि डिप्लोमा हुआ है तो जॉब करके मैं डिग्री कर लूँगा। पर मेरे टीचर लोगों ने मुझे समझाया, अभी आपको ये सब सपोर्ट मिल रहा है तो आप डिग्री करके ले लो। तो मेरे डिग्री के लिए उन्होंने मुझे, हमारे सुपरिटेंडेंट सोनोने मैम थे, उन्होंने CSA के लूसी ताई, आर्ट ऑफ लिविंग के राघवन दादा, ऐसे 2-3 डोनर्स थे, तो उन्होंने मुझे हेल्प की मेरा आगे का एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। जब आप इंस्टीट्यूशन से बाहर गए तब आप किसके साथ रहने लगे या फिर आप कहाँ रहते थे? और आपने अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं या फिर रहने का खर्चा है, घर भाड़ा है, वो आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली सर, मेरा इंस्टीट्यूशन छोड़ने के बाद ना मैं 4 साल हॉस्टल में ही रहा हूँ। मतलब वो कॉलेज का हॉस्टल हो या विद्यार्थी सहायक समिति का हॉस्टल हो,
अभी विद्यार्थी सहायता समिति मतलब क्या है, उधर सभी गाइडेंस, लाइब्रेरी वगैरह, लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट सभी वो दे देते थे। उनको सिर्फ एक 1 ईयर का फी था। तो मेरा कुछ 10 का स्कॉलरशिप भी मुझे यूज़ हुआ। और मेरे कोई टीचर थे गुड़ोनी मैम करके, तो उन्होंने मैंने भी हेल्प की थी मुझे वो कंप्लीट करने के लिए। तो डिग्री के लिए सिर्फ मुझे ये आया था, क्योंकि डिग्री की फ़ी बोले तो सर 1-2 लाख के ऊपर है, तो वो कैसे पे करेंगे। तो उसके लिए मुझे सोनवने मैडम ने CSA लुसीताई से बात कर रही थी, तो आपका नया प्रोग्राम भी आया था वो आफ्टर केयर, तो उसमें मेरा कॉलेज का फी था तो CSA ने उठाया। उसके बाद प्रॉब्लम आया किधर रहने का, खाने के लिए क्या एक्सपेंसेस वगैरह गए, तो आर्ट ऑफ लिविंग ने वो मेरी हेल्प कर दी। और बाकी का जो एक्सपेंस डे टू डे लगने वाला था, तो और एक शिव सह्याद्री करके फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, तो उसमें वो हो जाता था। और अदर कुछ लगा तो लुसीताई से बात करके वो हो जाता था। Suraj completed his bachelor's degree in 2018 and has been working as a sales engineer in a trading company since then. Now, while Suraj was lucky enough to have 3 organizations taking care of him, Satyajeet tries to understand from Suraj whether this is a common phenomenon. क्या ये सपोर्ट सबको मिल पाता है? नहीं सर, कुछ जन स्टडी करना चाहते हैं, कुछ जन को बाहर दूसरा हॉबीज़ रहते हैं, मतलब कुछ जन को क्रिकेट खेलना अच्छा है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ना एक ग्रुप था, उनका अंडर 19 के लिए सिलेक्शन भी हुआ था, पर आफ्टर 18 उन्हें निकलना पड़ा, तो वो उनका ड्रीम ही वैसा रह गया। तो कुछ बच्चे थे, कुछ उन्होंने तो एजुकेशन ही छोड़ दिया है, वो जॉब में लग गए। और कुछ जनों का तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है हमारे, मतलब उनका आगे क्या हुआ ये आइडिया भी नहीं है। The Integrated Child Protection Scheme, or ICPS, was launched in 2009 to create infrastructure and provide funding for the Juvenile Justice Act provisions. Under the ICPS, a state child protection society is authorized to disburse 2,000 rupees per month per care leaver to the organization running the Aftercare program. This is to cover, in quotes, basic needs of the child or youth, including food, clothing, healthcare, and shelter, age-appropriate and need-based education and vocational training, a stipend, and any other requirements. But is this enough to help care leavers fend for themselves? जब आप इंस्टीट्यूशन से बाहर आए, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलाउंस मिला था आपके डे टू डे एक्सपेंसेस या फिर आपके खर्चे उठाने के लिए? नहीं सर, एक्चुअली गवर्नमेंट का अलाउंस मिलने के लिए सर किससे कांटेक्ट करेंगे हम, वो पहला क्वेश्चन था। और गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है वो भी हमें आइडिया नहीं थी। अभी गवर्नमेंट एक 18 साल के बाद आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन रहते हैं, पर उधर भी सिर्फ आपको फूड और रहने के लिए जगह मिलेगी। आपको जो एजुकेशन वगैरह करना है तो वो आपको ही करना है, कुछ ढूंढ के आप अर्न एंड रन थ्रू सीख सकते हो। तो वही सिचुएशन के ऊपर हो रहा है। नहीं सर, वैसे तो मुझे गवर्नमेंट की कुछ हेल्प नहीं मिली, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब खुद ही बोलता है 18 के बाद तुम तुम्हारा कमाओ और तुम तुम्हारी पढ़ाई करो। मैंने ऐसे मतलब देखा था कि गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है या फिर कुछ हेल्प मिलती है मेरे एजुकेशन के लिए, लेकिन मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला था। जो गवर्नमेंट मेरे एजुकेशन के लिए, जो मेरे ड्रीम्स है, जो मुझे अचीव करने के, उसके लिए मुझे कुछ हेल्प मिल सके, वैसा सर कुछ भी नहीं था। Satyajeet poses the same question to Bharathy, whose organization, Kshamata, provides training, employment, and helps reintegrate women and adolescent girls who face exploitative situations. Do you receive any support from the government to do this work? No, we don't. Though we work very closely with the government, especially the government shelter homes, which are under the Department of Women and Child Development and the Social Welfare Department. We work in those homes. We have actually put in assets in those homes for training or for other purposes, and human resource as well. We do not get any support from the government. A November 2020 report by the New Indian Express stated that the situation for care leavers was worsened by the pandemic.
The lockdown resulted in the loss of jobs and income, and care leavers experienced a crisis of food, housing, health, and livelihood. Vaishali tells Satyajeet about the challenges she faced after coming out of a childcare institution months before the pandemic hit. जब मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आई CCI से 5-6 मंथ मेरे बहुत अच्छे गए. मुझे फाइनेंशियल अकाउंट का कोर्स भी मिला था और फाइनेंशियल अकाउंट कोर्स करते करते ही मुझे वही बेसिक पे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ICICI बैंक में जॉब मिला था. जो उसकी सैलरी थी 10,000 थी स्टार्टिंग में. फिर मैं वो अच्छे से जॉब करी थी और फिर नहीं कोविड आ गया. जो कोविड की फर्स्ट स्टेप थी तब मैं, मेरी मॉम और जो मेरी छोटी सिस्टर है तभी वो भी घर आ चुकी थी. तो हम तीनों को भी हम कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. और उससे पहले ही 2 मंथ पहले ही मम्मी बहुत बीमार थी तो उसको भी एडमिट किया था. तो जो मेरी सैलरी थी जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने सब हॉस्पिटल में पेड कर दिया था. तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था. मतलब जो भी था ना तब मम्मी ने भी काम छोड़ दिया था. सब अच्छा चल रहा था. फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिक पे मुझे जॉब मिला था. मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ था मेरा कोर्स लेकिन उन्होंने मुझे जॉब पर ले लिया था क्योंकि मेरा स्किल वगैरह देखकर. और फिर वो जॉब मैंने 5 to 7 मंथ तक किया. फिर उसके बाद ये कोविड का प्रॉब्लम आया था. फिर मैंने मम्मी को बोला था कि मतलब तू बार बार बीमार पड़ती है, तू जॉब पे मत जा, छोड़ दे जॉब. और फिर मम्मी छोड़ने नहीं वाली थी लेकिन उसकी जो आंटी थी वो अमेरिका चली गई. फिर मम्मी को अनफॉर्चुनेटली वो जॉब भी छोड़ना पड़ा. और फिर उसके बाद मम्मी ने नहीं किया जॉब, कहीं भी अप्लाई नहीं किया और फिर मम्मी को जॉब मिला भी नहीं. फिर उसके बाद मेरी मॉम और मेरी स्मॉल सिस्टर है, हम तीनों भी कोरोना पॉजिटिव थे. फिर हम 3 मंथ घर पे ही थे. जो सर थे हमारे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. फिर उन्होंने बोला कि नहीं क्या 1 मंथ हो गए तो जॉब पे नहीं आई, ऐसा नहीं चलता है. वो मेरा जॉब सबसे अच्छा था, सब ठीक भी चल रहा था. लेकिन वो जॉब जब छूटा ना तो मुझे बहुत टेंशन आया था. फिर मैं मेरे मॉम के पास बहुत रोई थी. मैंने जो जो अपने दम पे किया, जो तुझे देख के किया वो मैं सब खो के मतलब ने क्या गई. और उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी. 3 मंथ मेरे पास कुछ भी नहीं था. हमारा जो ग्रोसरी जो घर पे वो भी सब खत्म हुआ था. मॉम के पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे. और जो हमारे रिलेटिव्स है वो हमें किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करते थे और ना ही हम उनको हेल्प के लिए बोलते थे क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता था कि किसी को खुद ही बोले. वो सब देखते थे कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तीनों भी कोरोना पॉजिटिव है, कहाँ से ये सब करेंगे. प्लस मेरे पापा नहीं है. मतलब पापा थे तब सब अच्छा था, तब सब आते थे रिलेटिव्स. लेकिन पापा जाने के बाद सब ने हमसे पूरा नाता ही तोड़ दिया था. मतलब हम है या नहीं ऐसा उनको कुछ भी नहीं लगता था. फिर जो कोरोना जो मेरी हालत थी ना वो सिचुएशन मेरे लाइफ में वापस कभी नहीं आए. वो कोविड के सिचुएशन में मैंने लूसी मैम को फ़ोन किया था कि अभी घर में कुछ ग्रोसरी भी नहीं है. मेरे 3 मंथ हो गए, जॉब भी छूट गया और मेरी जो एल्डर सिस्टर थी वो जॉब के लिए मतलब जा नहीं रही थी क्योंकि उसका ब्यूटिशियन का कोर्स चालू था. वो उसके घर पर ही प्रैक्टिस करती थी और कोविड था, पार्लर वगैरह कुछ भी खुले नहीं थे इसलिए वो कहाँ भी जॉब के लिए जा नहीं सकती थी. तो फिर मैंने लूसी मैम से कांटेक्ट किया. फिर लूसी मैम ने जो अफेक है उसके थ्रू मुझे ग्रोसरी 3 मंथ प्रोवाइड की. तो मैं अफेक को तो मतलब ने क्या बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने मुझे ग्रोसरी प्रोवाइड की. In August 2021, a few care leavers in India launched the National Care Leavers Network, a youth collective focusing on aftercare for care leavers. NCLN is an independent body of care leavers owned and managed and run by care leavers. Their charter of demands identifies key issues they face and includes recommendations to help mitigate these challenges. Finding a job, renting a home, societal reintegration, and lack of self-worth are just a couple of the problems they've highlighted. Care leavers largely do not receive any form of support or mentorship once they exit a CCI. However, Vaishali is a rare case where she did receive help from CSA, but she still went through her own set of hardships after leaving a CCI. CCI से बाहर आने के बाद मुझे ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सके. जो मैंने खुद को डेवलप किया और क्योंकि
5 years CCI में रहने के बाद मतलब रास्ता भी जो रोड है वो भी क्रॉस करने के लिए नहीं आता था। तो 5 years के बाद बाहर जाना तो मेरे लिए बहुत ही हार्ड वर्क था वो मेरे लिए। तो मैंने खुद को डेवलप किया कि अपने आप से खुद सीखी और मैं खुद घर से बाहर जाती थी जॉब ढूंढने के लिए, या फिर कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर नहीं, मतलब ने क्या गवर्नमेंट का भी मैंने बहुत देखा था, लेकिन मुझे अच्छी हेल्प मिल सके ऐसा गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और जो मुझे गाइड कर सके ऐसा भी कोई मतलब मुझे नहीं था मेरे माँ के सिवा और मेरे मतलब जो सोशल वर्कर थी उसके सिवा। 2 years ago, the government of Maharashtra introduced a 1% reservation in education and jobs for orphans. This was a huge first. You could avail this opportunity so long as you possessed an orphan certificate. This is provided to children after verifying the death certificates of parents and completion of a social investigation of the child. But unfortunately, very few individuals are aware of the fact that an orphan certificate can be acquired by applying to the Child Welfare Committee. Suraj shares details on how to obtain the certificate and what benefits it entails. ऑर्फन सर्टिफिकेट सर, ये अभी गवर्नमेंट ने 1% रिजर्वेशन दिया है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, उसमें कॉलेज एडमिशन्स वगैरह। पर वो सर्टिफिकेट निकलने के लिए सर आपको इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आप उधर रहते वो प्रूफ वगैरह। तो वो डॉक्यूमेंट लेके वो समाज कल्याण आयुक्तालय का ऑफिस है उधर सबमिट करेंगे। पर उसमें भी ये फॉल्ट है कि ऑर्फन किसे समझा जाए। ऑर्फन की डेफिनेशन ही नहीं है, किसको मॉम डैड नहीं है, ऑर्फन कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है। तो ये डेफिनेशन है। ये सर्टिफिकेट लेके भी सर जॉब मिलेगा या नहीं इसकी कुछ गारंटी भी नहीं, क्योंकि 1% आरक्षण है। 1% में सर मतलब क्या हो सकता है कुछ। एक ने अप्लाई किया मेरे दोस्त ने, उसको सर्टिफिकेट भी मिला है पर उसको बेनिफिट वगैरह अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि उसने क्या अभी 12th का एजुकेशन किया है सिर्फ। तो अभी वो गवर्नमेंट के कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेगा, उसका स्टडी करेगा, तो वो गाइडेंस वगैरह भी उसे देना पड़ेगा ना सर। Empowering Youth Leaving Care at 18, the white paper co-authored by Geeta Gopal and CSA, states, and I quote, "There is no documentation on how to develop an effective aftercare program. No consensus on program components or measurable outcomes. Additionally, there is no documented evidence describing widespread, systematic provision of aftercare services tailored to the needs of each care leaver." So, without any structured approach to help and support care leavers, what option do they have? अगर कोई बच्चा जो एक इंस्टीट्यूशन में बड़ा हो रहा है, इंस्टीट्यूशन से निकलने से पहले ऐसी कौन सी स्किल है या फिर ऐसा कौन सा ट्रेनिंग है जो उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए, तो वो क्या होगा? मैं ये बोलूँगी कि उनके अंदर का जो डर है वो निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक डर रहेगा ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मतलब हमें जो चीज़ें करनी है वो हम कर नहीं पाएंगे। इससे पहले तो स्किल डेवलप करने के लिए उनको सबसे पहले उनका डर निकाल के उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तू ये कर सकती है। मतलब लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है तो हम बोलते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये मेरी सिचुएशन है, मैं इसको फेस कर सकूँगी, ना डरे। और कोई भी मतलब नहीं क्या कोई कारण बता के, मतलब कोई कारण होना नहीं चाहिए हमारे पास कि हाँ मैं ये नहीं कर सकूँगी। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी मतलब चीज़ करने के लिए, फिर वो नीचे का वर्क हो या फिर ऊपर का वर्क हो, कोई भी हो, उसके लिए हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब हमें कॉन्फिडेंस मिलता है तो जो अलग स्किल है वो अपने आप ही अपने अंदर आ जाती है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम वो वर्क करने के लिए जाते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर हार्ड वर्कर की जो मतलब स्किल है वो अपने आप आ जाती है। कंप्यूटर नॉलेज अगर बेसिक भी हो ना तो हमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे भी जॉब तो मिलती है, इसलिए कंप्यूटर स्किल हो या फिर कोई भी स्किल हो, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें वो लेनी चाहिए। Despite aftercare being an integral part of the Juvenile Justice Act, in practice, it remains overlooked and inadequate to a large extent. Suraj puts forth his suggestions to the government on how they can assist care leavers
and improve the aftercare services in India. अभी हम इधर रहते ही स्टेट में, तो उधर डॉक्यूमेंटेशन, बहुत जन बच्चों को मालूम ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए उनको प्रूफ चाहिए, तो वो पहली हेल्प करनी चाहिए। जो आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन है, अभी तो मैं उधर रहे ना, मेरे दोस्त रहे उधर, सिर्फ सर रहने के लिए और खाना की सपोर्ट मिलता है, पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कुछ जॉब के लिए गाइडेंस, तो वो क्लासेस वगैरह गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए जाने चाहिए। और जब आफ्टर केयर से जब बच्चा निकलेगा तब उसको कुछ जॉब को लगा के प्लेसमेंट वगैरह देनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना सर, मेरे साथ जो बच्चे थे, कोई जनों को उनका रिलेटिव है कि नहीं वो भी मालूम नहीं था, उनका गांव किधर से आए, तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो हमारे स्कूल में बनाया था, उनको नाम। अभी हमारे स्टेट में ज़्यादा ये कास्ट रहते हैं, तो कास्ट क्या है, अभी जो ग्रोसरी का बात कर रहे थे हम, तो उसमें रेशन कार्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये इसके लिए सभी सपोर्ट चाहिए ना। तो फिलहाल आप बता पाएंगे सूरज की फिलहाल जो बच्चे रहते हैं सीसीआई में, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको? अभी सर डॉक्यूमेंट तो पहला तो ऑर्फन सर्टिफिकेट, तो उससे वो बाकी के रेशन कार्ड, अभी हमें बैंक अकाउंट निकालना है तभी भी आपको आधार कार्ड वगैरह लगता है। तो अभी हमारा जो आधार कार्ड था तब हॉस्टल में निकाल के लिए थे बच्चे ने, पर हमारा जो आधार कार्ड निकाला है वो हमारी हॉस्टल के एड्रेस से ही निकाला है, तो अभी चेंज करना, तो उसके लिए आप किधर रहते थे, उधर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। According to 2018 research by Make a Difference, less than 25% of the total care leaver population got aftercare support. Under the Juvenile Justice Act, all young people who leave CCIs are required to receive aftercare services. Eventually, the inadequacy of an effective tracking or follow-up mechanism causes care leavers to fall off the radar, and they become, quote-unquote, nobody's responsibility. The lack of legal documents for identification leads to missed opportunities while looking for jobs or applying to educational institutions. Satyajeet talks to Bharathy about the solutions to fixing these issues. What change would you like to see in the current existing mechanisms and system of aftercare in India? The only way to scale impact is to actually collaborate. So nobody escapes. We all are accountable. So I think that is one way to do it. The other thing is sharing of information, more transparency and trust between stakeholders is lacking tremendously in this area for some reason. And I've seen this for the last 20 years, that the transparency and trust needs to be strengthened, because our woman, our girl is moving from one system to the other. So she deserves collaboration. She deserves that transparency where we share our information and trust with each other, including government mechanisms, right? Because a lot starts with the government mechanisms. I think with rehabilitation and reintegration work, options have to be created for the women, and that can come when different stakeholders work together and trust each other. I think the case management approach need to be strengthened to strengthen the mechanism itself. So case management is nothing but, again, stakeholders sharing information, talking about one girl, and ensuring that all her information is passed on from one institution to the other, and there is justice done to the whole process of rehabilitation and reintegration. I think to strengthen the mechanism, we need more professionals and more experts into this space. Very few want to actually get their hands dirty because it's very messy. We are trying to create miracles out of a mess, and the lives that have been abused for so many years, injustice done, we are trying to change it in a few years. And I mean, it takes about 2, 3, 4 years to actually feel empowered or feel that she can make her decisions. It takes a long time because of the trauma and past baggage. And this requires more professionals participating in this space. I think that's another way to strengthen any mechanisms, to have more professionals and people. I think strengthening referral systems, how to keep each other accountable, is another way to strengthen any mechanism. This requires a lot of financial support. So more policies, more budgeting and policies is very important. Case management approach to be kind of a guiding factor for also, there has to be some standardization in the way we work.
I have worked in sanitation, and I've seen how political will can change and impact a nation. Political will is very important to work with women from these vulnerable communities and vulnerable backgrounds. Lastly, participation of the society. It is not my and your problem to address all the time throughout our lifetime. This is something that we have started, and this is something that we have created so that other people in society, like we have a lot of volunteers from around societies and communities who actually participate in the building of the lives of these women. I see this as a situation which requires participation of the society as a whole, because we are talking about social reintegration. We're talking about women moving back in society. How much is the society prepared to participate in this process? I think that's, again, a very important aspect. Care leavers are a part of our nation, and many of them have been in unfair situations and circumstances. Most of us have been oblivious to their existence and the difficult conditions they've been in. This podcast is our way of educating you on what you could do to help them. During the lockdown, as a society, we stepped out of our comfort zones and lent a helping hand to the ones who needed it the most. So just like that, we need collective participation to mend what's broken. This is the only way that government policies on aftercare can be implemented effectively so that every care leaver gets a fair shot at living a normal life just like any one of us. Thanks for tuning in to Care of the State, a series by Catalyst for Social Action. We would love to hear from you. If you have any questions or want to get involved in the work that CSA does, send an email to connect@csa.org.in. Conceptualized and hosted by Satyajeet Mazumdar. Marketing and Communications by Henal Shah, Pranay Jajodia, and Kinjal Mehta. The creative team were Anuja Kokani and Shahaji Patel. This is a Made in India production. Writer and project manager, Veda Sushila Mohan. Production head and editor, Joshua Thomas. Sound mixing by Karthik Kulkarni. Project supervisor, Sean Phantom. And voiceover by May Mariam Thomas.